Chennai is also freezing? It's very present. Huh? It's very present, sir, around 20, 21, 22. Wow. Yeah. And for a change, you never know. The climate will change from next month onwards. ऐसा मत बोलो सर, हम लोगों को विजिट करना है. I know. तब तक संभालेंगे सर क्लाइमेट को. अच्छा ऐसा है क्या? गुड नाइस. तो चलो, आई होप all of you had a chance to value startup businesses and had got a chance to look at startup companies and how do you identify startup companies, right? Is my assumption correct in what I'm saying? More people might join, so by now you have a good understanding how to you look at startups and what are the phases of a startup and how do you try to value a startup. One way is what we learned is the TAM analysis. And the second way is we use multiples like price to sales multiples. Earnings तो उसमें होता नहीं है because it's a startup, it's a money losing business and it is diluting. So that is why we use price to sales as a reference point to try and value a business. Correct. So all of you have done few examples or all of you have seen a few companies, I hope. Yes or no, please mention. No, सर sir. आइडेंटिफाइंग इज ओके, बट अभी तक वैल्यूएशन पे थोड़ा करना है, थोड़ा नहीं मतलब काफी करना है ये वैल्यूएशन पे. आइडेंटिफाइंग इज ओके. So by now identification तो हो रहा है ना सबका. हाँ जी सर. So today there is one startup where there is a lot of FOMO and everybody wants to buy this company and get into it. So I thought, why not we try and value this company just as an example. So the name of the company is called Kintech Renewables. Anybody knows about Kintech Renewables? Which company is Kintech Renewables? SG Mart, sir. Yes, SG Mart. And you would be very surprised why this company is going circuit, and hardly you are able to get the stock. And recently they did a preferential round. They raised around 878 crores at the price of 5,000 rupees. And today the market cap of the company is around 6,500 crores. Correct? If the market cap of 6,500 crores and I am looking at the price to earnings multiple for this company, so it's not making any sense. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. Visible. So there is an element of first of all there is an element called pre-money and post-money valuation. What do we mean by pre-money and post-money? Whenever a company raises funds, whatever the amount of funds is, that amount of funds, your stock price will not change. That amount of funds will get added to your market cap. So that is called pre-money and post-money valuation. That is one thing which we should always know, because nowadays many companies are raising funds and they are doing preferential rounds and बहुत सारी ऐसी companies हो रही हैं जिसके अंदर ये चीज हो रही है. So one thing to be very scared about, why every Tom, Dick and Harry company is raising funds. Until or unless you don't have an idea what they will be doing with these funds and deploying these funds to some good use or some bad use. Correct? If they are raising funds to pay down debt, which is okay, but at the end of the day, you should raise funds to increase the business. Now, if I look at the PE over here, the PE is 237. Recently, few members visited Dr. Vijay Malik's conference in Bombay, and he might have taught you about PEs. How does he value companies? He uses PE. And PE beyond 12 and 15, he has a heartbroken where he sees PEs above 10 and 15. He doesn't buy companies where the PE is above 10 and 15. If you look at ROCs and ROEs, they're hardly anything, not even 1%, which is bad, really bad. There is also some element of debt over here. Price to sales is 4.6, which is high. Price to book value is 40 times.
So whatever the assets in the business, we the investors are today willing to give this company 40x, and this is the price chart. It is very obvious this price chart is going circuit. Okay. So if I say I value a company by PE, but this company is a startup, it is not optimized to give me PE valuations, and this is the P&L. Have a look at the P&L. This is the yearly P&L, and this is the quarterly P&L. Have a look at the P&L. See what do you understand. Is this a startup? Yes or no? Looks like a startup from these figures. Yes, sir. Yes, Looks sir. like a startup. Yes, sir. Of course, it's a startup. The revenues have just started up, and I said they did a capital infusion from 1 crore shares. Now they are down to 4 crore shares, and your reserves have gone up from 11 crores to 153 crores. और इसके बाद आया है basically. यहाँ तक तो नहीं आया था वो fundraise इसके बाद आया. That's was somewhere in the month of November. So the next balance sheet you see, you will see the fundraise has been done. So this is the business it's all about. It's making around 27 crores in TTM, 17 crores last quarter, 9 crores and 1 crore. If you look at the growth, there is a humongous growth from 1 to 9 and 9 to 17. 9x over here and a doubler over here. You see the revenues, they are going up very fast. You see the product segment, what the product segment the business is doing. This is the old data, that is why you're not seeing this till September 2018. Now it was in a renewable energy sector. Now the business has changed, and they are doing a hell lot of things. Let's go and try and look at some results. So these are the results. See the QOQ growth. Look at the numbers. Fabulous numbers. Okay. So before trying to value this company and before trying to do any damn thing, let's try and they have done two fundraisers actually. One was at the price of $450 and another one was the price of $5,000. ये सब details आपको मिल जाएंगी इसके अंदर. $5,000. Let's try and understand what the business does. So recently they came out with an presentation. This is the presentation for SG Mart. You can check on screener and you can see this presentation. What all material do you see over here? In the background in this image. Ladder, bricks, cement Build- blocks. Building materials. All this belongs to the building material sector. B2B. So they are selling business to business. So this is very good information which they have given about their business. They have a downstream steel network. This constitutes the downstream stream, fixtures, fitting and bar fittings and the tiles industry. Now, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि सर आई एम नॉट एबल टू फाइंड द टैम, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द सैम और द टॉम. आई होप जिन लोगों ने पहले के सेशंस अटेंड किए दे नो व्हाट दीस metrics are. So once you read across the industry, once you read across the value chain, कहीं ना कहीं आपको ये डेटा मिल जाता है. Or you even go and do a simple Google search, you will get this data, which is very simple. Now downstream has got TMT bars. Since it is a sister concern company of APL Apollo is not making TMT bars, but SG Mart is selling TMT bars. And they have a company called Apollo Mart, and which SG Mart is running the same thing. And Shankara Bilcon is selling TMT bars in the retail sector, and they have a retail outlet where they are selling these TMT bars. Then you come to structural steel. What is 1 billion rupees? Not asking about dollars. How much is 1 billion in crores? Very quickly, without looking at Google. Who will answer? 100 100 crores. crores. Yes, 100 crores. So this is structural section in structural steel market is 400 billion. So कितना करोड़ हो गया ये? $400 billion 40,000. 40,000 crore. 40,000 करोड़. प्लीज इसको अपनी नोटबुक में लिख लो. 40,000 crores.
What is the revenue of APL Apollo? Because they are mainly into structural steel and metal sheets. ये दो काम उनका मेन है जो इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है APL Apollo. अब वो छोटा हो, मोटा पाइप हो, कैसा भी पाइप हो, what is the revenue of APL Apollo? 16,166. Yes, yes. Correct. So Yes, sir. if my total market size, total addressable, see APL Apollo is not a startup, so please don't mix your this calculations over there. So if my market size is 40,000 crores, 16,000 crores has been captured by APL Apollo. इसमें क्या है कि थोड़े से कुछ अनलिस्टेड है वो हटा दो तो लिस्टेड मार्केट इज अराउंड 33,000 crores. So APL makes it around 50% of the market. Then metal sheets. See the market size of metal sheets. It is more than structural sections. APL is a big player in making metal sheets. Welding rod आपको पता ही क्या होती है welding rod. मैश नेट स्टील्स भी आपको पता है क्या है कि ये जो बनते हैं वेयर हाउसेस वो पॉली हाउसेस बनते हैं उसमें बाइंडिंग वायर भी शायद आपको पता है क्या होता है व्हेन यू डू दैट प्लीज म्यूट आई थिंक सम किड इज स्पीकिंग बाइंडिंग वायर यू आल्सो नो व्हाट इज बाइंडिंग वायर जो आपका सरिया बांधते हैं सरिया बांधने के लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए बाइंडिंग वायर इज यूज्ड करेक्ट सो see the size of downstream steel segment today which is 4.1 trillion 4.1 lakh crores. It is expected to be 5.6 lakh crores by 2027. कितना परसेंट ग्रो करेगा that basic calculation you can do. See the size of fixtures, fittings, bath fittings, electrical fittings 1.3 lakh crores to 1.8 lakh crores. And see the size of tiles industry 0.4 lakh crores to 0.6 lakh crores. Which segment is growing the fastest or is going to grow the more percentage wise? Is it downstream steel? Is it bathroom fittings and fixtures and fittings or the tiles industry? Steel, sir. Tiles Who's industry. Percent wise is tiles industry, Yes, 50% growth. 50% growth. So there is a good scope to muddle our heads in the tile industry. We don't get the time, no. We are getting lots of information from this presentation, basically from this one page. Wow. So if I have to go to the tile industry, who will I bet my money on? A new baby, which is opening up shop, who doesn't have customers, who doesn't have the money, who has to take debt from the bank, who has to dilute equity, or a leader of the pack who's more established. Of course, Kajaria is the answer. So how do you generate ideas? You get ideas automatically when you read across the industries. Now, APL steel and steel industry has nothing to do with the tile industry. Basically, he is giving me the addressable market size of B2B construction material industry is 6 trillion. Over here, we are not counting the business to consumer selling, directly B2B. And this industry is expected to go to 8 trillion. होगा नहीं होगा वो बात की बात है. And SG Mart is a retailer. ये सब लोगों से stock लेगा. He will keep in his mart or his online portal or whatever the thing is and he will sell. That is the reason you are seeing over here the revenue is growing very fast. Quarter on quarter 47,000% because पुराना बेस कुछ है ही नहीं यहाँ पर जीरो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप निकालोगे तो आपको ग्रोथ बहुत फास्ट दिखेगा and they have done dilution and what they will be doing with this 1,000 crores they will be becoming an aggregator like a platform for more and more and more people to sell their merchandise online on their platform. ठीक है if I look at their margins, their EBITDA margins are just 1 to 2%, which might go up to 3%, 3.5%, but not beyond that, because it is kind of a trading business. और ट्रेडिंग बिजनेस में यहाँ पर ये इतना ज्यादा रेवेन्यू करना चाह रहा है, where he will be able to make good amount of profits. So what is your total addressable market size? What do we take? The 6 trillion or the 8 trillion? I hope all of you by now must have tried how to value a business. Which number should we take?
आप लोगों को क्या लगता है which number should we take? 8 trillion. Hmm? 8 trillion. Yes, the forward number. Yes, So sir. please tell me what is the formula we had learned. Value of a business is equal to what? क्या फॉर्मूला था बताओ. M. आवाज क्लियर नहीं. टोटल. सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत है. स्पेलिंग बताओ मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है. सही है मेरी स्पेलिंग. टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज. आगे. NPM. धनंजय जी आपने बता दिया. बाकी लोग भी कुछ बोलेंगे तो फायदा रहेगा ना. व्हाट इज द फॉर्मूला वी लर्नड. उसका growth of ग्रोथ. that particular company ग्रोथ. into ग्रोथ तो है ही नहीं इसमें. growth in the market share. भाई कितना market share होगा उसका. ग्रोथ इन द मार्केट शेयर. ग्रोथ इन द मार्केट शेयर था ही नहीं. आज क्या मार्केट शेयर है. लेट्स कम बैक. It's today it is 6 trillion. And what is the market share of SG Mart today? We have got 3 quarters data. 6 trillion is 6 lakh crores. My turnover is 1400 crores. What is my market share today? So you have to actually put the number. What would be his market share at the terminal year? What would be his market share at the terminal year? The terminal year in this calculation is 2027, which is 3 years from now. You see what is the growth of the TAM from now to there, and you estimate growth of the TAM is 50%. We are at 6 trillion. Increasing 50%, we go to not even 50%, from 6 to 8. What is the growth of the TAM? 30%. 30%. 33%. What is the formula? मेरे को तो लग रहा है किसी को भी यही नहीं पता है. तो सब लोग कह रहे हैं कि हमने वैल्यूएशन किया या वी ट्राइड. What is the Sir, formula? TAM into market share into net profit into P. This is the formula. Net profit कौन सा आज का या future net profit? Of course future net profit. So now we have the first variable which is TAM of 8 lakh crores. What do you see this company can have a market share going forward? What is the market share today? 2%. हाँ 2%. ठीक है. Agreed. This is our assumption. Somebody will assume 1%, somebody will assume 2%. So if I take a 748 crore revenue, suppose I see the growth is going to be very so fast, and this 748 is going to come up to 1000 crores. Best estimates. So 1405 plus 1000 crores. Estimated sales for this year would be 2200 or 2400 crores. Divided by 6 lakh crores. Gives me a market share of 0.0004% today, as per the numbers. 0.004%. Can it go to 2%? Suppose Abhijit sir says 8 lakh crores into 0.2. Not in the same thing. 0.2 or 8 lakh crores. What becomes my value over here? कितना होगा? 1,60,000. हाँ 1,60,000. सॉरी क्या नहीं सर 16,000 सही है. 2% 16,000. क्या ये कंपनी 16,000 करोड़ रेवेन्यू कर सकती है? कर सकती है सर, बिकॉज देखिए इनका जो एपीएल का मार्केट साइज है वो 16,000 करोड़ का, विच इज 50% ऑफ देयर ऑफ द स्टील ऑफ द स्ट्रक्चरल मार्केट साइज. और अगर ये कहते हैं कि हम सारा B2B बिजनेस एसजी मार्ट के थ्रू करेंगे तो ही ये कर सकते हैं उतना बिजनेस. तो सर
assumptions and these things can be different. My assumption over here, the market shares can go up to 5%. Okay. 4 to 5. I will not say 5. I'll say 4 to 5. Their market share Yes. of 8 lakh crore, they can capture 5% of the market. 4 to 5%. Okay. That is the base case. Let's take it as a fair case of say 2.5%. Let's take it as a fair case. What will be their future? ये 0.004% कहाँ से आया था? मैम वो आंसर आया ना 0.004. अभी कितना इनका सेल्स है 1405 3 क्वार्टर का. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि Q4 में इनका सेल्स 1000 करोड़ आएगा. So I've added 1000 crores to 1400 crore sales and divided it by 6 trillion. तो मोटा मोटा इनका 0.004 आंसर आता है, not the percent. सर ये 0.2 है या 2% है? 0.2 के साथ 1,60,000 आएगा और 2% के साथ 16,000. सर 0.2 को 0.02 लिखो, ये 2% करो. Now ठीक है. 2.5% is a fair case scenario. They can be going up to 1.5 or 2.5. What would be their net profit margin? सर 3%, 2 to 3% है तो 16,000 करोड़ 480 करोड़ रुपए 3% के केस में. नहीं अभी कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन है? 17 crores divided by 748, the recent quarter. Sir 2% 3% is the approximately market share. 2.3% approximately. अभी 2.3%. 2.2 हाँ 2.3. Am I audible? Hello. हाँ जी सर. Yes, sir. तो मेरा नेट चला गया था. Okay. What is the net profit margin today? See, always keep in mind they will never be, ideally they should not be able to cross 3.5% on EBITDA levels. बाकी इसमें इंटरेस्ट और वो कोई ज्यादा कंपोनेंट नहीं आने वाला. जितना अदर इनकम आएगा उतना इंटरेस्ट को कैप्चर कर लेगा. So in my best opinion, their net profit margin can be max to max 2% after taxes. What can be their future price to earning multiple? अभी कितना आ रहा है price to earning multiple? अभी 237. But आगे चल के जब ये कंपनी बड़ी हो जाएगी, the price have ran up too fast versus the fundamentals. Do you think the price to earning multiple will be 237, or No. it will drop, or it will It drop will down? drop. What is in your best estimate the price at earning multiple to be? So 50 to 60. Maybe. Sir, I am assuming 30 times. Okay. What becomes your answer over here? Please do the math. 16,000. 8 lakh crore to 2. 5%. 16. 12 lakh crore. 12,000 crore. 12,000 crore. How can it be 12 lakh crore? मेरा पूरा market size ही 8 lakh crore है. 12,000 crore. 12,000 crore. 12,000 sorry. 12,000 crore. So my crude estimate of valuing this business is somewhere between 12,000. See, it's never a fixed number. 12,000 crores to 13,000 crores. Now, what are the variables can change? What is my estimate? See, this very hard. This will change. It can go down. Very hard will go more beyond 2% because it's a trading business. This definitely it can change. This depends upon the market. This definitely can go lower.
ऊपर जाएगा, highly different. Suppose I just change these figures, I make it 3% over here. The PAT is again 2%, and I make it 40 PE. Now see what you get. 480 into 40. 19,000 crore. 19,200. 19,000 crores. So tentatively, this is my one case. This is my another case. Tentatively, I should be getting the value of this company at 14,000, 15,000 crores. मैंने दोनों का एक मोटा एक 20 का एवरेज ले लिया. What is the market cap today? 6,400 crore. Now, don't miss, we are trying to value this business as 2027. Am I willing to wait till 2027 to get this multiple? 2x growth. This is not 2x growth, this is 6,500. So the thing is, I am starting here at 6,500, and in the matter of 24, 25, 26 and 27, 24 will be shuru hua hai. In a matter of 4 years, I am going where? I am going to 14,000 crores. Okay. Now punch in your financial calculator, see the CAGR growth, see the CAGR. I'm assuming taking a extreme case and a fair case scenario, and will always be a bear case also. So starting value 6,500, ending value 14,000, period 4 years. 21%. 21% here, 21%. which is very good. Provided I am willing to wait for 4 years, this CAGR is still very good. And provided this company is able to capture 2.5 to 3% market share. So now let's take a bear case. Let's suppose we are able to capture only 1.5%. We need to have all the cases, no? 1.5%. Again, the profit drops down to 1%, and the PE drops down to 18. What becomes your bear case value? 2160. 2160 crore. 2160, not possible. सर 12,000 का 1% 120 करोड़ 120 करोड़ को 18 के मल्टीपल से 2160 करोड़. 12,000 का नहीं सर, 8 लाख करोड़ का क्या कर रहे हो? ये इक्वल टू के बाद की वैल्यू है. ओके 8 लाख करोड़ आएगा सर. दिस इज द इक्वेशन. हाँ सर 8 लाख करोड़ का 1.5% 12,000 करोड़, उसका 1% 120 करोड़, उसका 18 से मल्टीपल 2160 करोड़. क्या ये सही है बाकी लोग? हाँ सर सही. हाँ सर सही है. 160 है. तो दिस इज अनलाइकली नो, बिकॉज वो प्रेफरेंशियल्स कर चुके हैं और उनका 2 बार वो कैपिटल रेज कर चुके हैं. अब यह समझने की बात ये है कि अगर इन्होंने दोबारा से फंड रेज किया, से 1,000 करोड़ और 2,000 करोड़, your market cap will go up, your stock price will not go up, and then this will affect your valuation. Secondly, now let's come to some real case scenarios. To come to 2.5 or a 1.5 or a 3%, so what becomes their top line? Now calculate their top line. 8 लाख करोड़ का 2.5% कितना होता है? Forget बाकी का इक्वेशन, just focus on 20,000 करोड़. 20,000 करोड़. अभी उनका रेवेन्यू कितना है? 2,200 करोड़. 2200 को, हाँ 2200 करोड़ सॉरी. अगर Q4 में हम 1,000 करोड़ मान लेते हैं, हाँ जी, तो आज 2,200 करोड़ है, 4 साल में क्या वो 20,000 करोड़ हो सकता है? उसको कितना % कैगार से ग्रो करना पड़ेगा? Today it is 2,200 crores. Today it is 2,200 crores. Sorry. 73% से ग्रो करना पड़ेगा. Is it possible? 73% CAGR growth in the top line. बट एज अ स्टार्टअप अभी तो कर सकते हैं, आगे इतनी ग्रोथ. Is it possible? Do you see that? अगर उसको 73% से ग्रो करना पड़ेगा to get to a number of 20,000 crores, can you estimate the revenue
2025, 2026, then 2027. कम ज्यादा करके it has to get at least 70% growth, तभी तो it can capture 2.5% market share. Correct. So if my sales in 2024 is 2200 crores, so if I add 70% on this, what would be my sale in 2025? Just add 70% on this. See, we are just calculating numbers. The numbers can be up down because we are focusing on the CAGR. So what can be the number over here? 3,700 crore. 3,700 crores. I divide it by 4 quarters because I will not get to know the numbers accordingly. I have to divide it by 4 quarters. So मोटा मोटा 1000 करोड़ की सेल वो करेगा, 900, हाँ जी, 900 से 1000 करोड़ की सेल करेगा, तब जाके उसको 3700 करोड़ का मल्टीपल मिलता है 70% growth पे, which is possible because if we are assuming Q4 this सर year विच इज is पॉसिबल, क्योंकि अभी हम 1200 करोड़ से 2200 करोड़ तो ऐसे ही अज्यूम किए हाँ, Q4 में which बचे is होंगे possible, स्टॉक. which is हाँ. possible. Now let's get to 2026. How much sales he needs over here? 70% of approximately 4,000 crore ही हम देख लें. Yes, correct. 2,800 crore, 6,800 crore. 6,800 crores. And 2027? 6,800 crore into 70%. 11,500 crore. So is 11,500 crore 2.5% of 8 lakh crores? Because we are calculated 73%. No, it is 2% of that. That will be 1.5%. That would be 1.5%. So we would be getting down to this scenario. So that means this 73% is wrong. Calculation ठीक से करो. Sorry? Calculation तो ठीक से करो. So to get to 2.5% of or 2%. सर 25 में होगा 3806. 38 मान लो ना. अरे इसको मैं 4000 पकड़ लेते हैं. यहाँ पर 4000 पकड़ लिया, इसको मैंने 7000 पकड़ लिया, इसको मैंने 12000 पकड़ लिया. सर 28 तक होगा ना वो 73 27 नंबर तो ढंग से देखो सर. 27 एस्टिमेटेड. 27 सर वो 28 मार्च तक नहीं आएगा. 28 पकड़ो. चलो एक साल आगे और ले लो आपकी कैलकुलेशन में. तो व्हाट बिकम्स योर वो 20,000 हो जाता है ना, फिर 20,000 तक हो जाता है. चलो ये ठीक है. 20,000 हो जाता है यहाँ पर. तो इस ये करेक्ट है. 12,000 का 70% इज 20,000 बिकॉज आई एम नॉट कैलकुलेटिंग. तो इस 20,000 2.5% ऑफ 8 लाख करोड़. Yes. श्योर. 2.5%. Yes. बाकी कोई बोल नहीं रहा. यस बोलो बोलो. अरे सर अगर सही है. Correct. So can they get a 20,000 crore revenue? Yes. With this possibility, if they grow at this speed, they can get a 20,000 crore revenue. So if a 20,000 crore revenue is coming in 2028, I have a PAT margin of 2%. What becomes my PAT? 400 crore. 400 crore. Now I can go and value this company. What is my market cap today? 6,500 crore. divided by 400 crore. What becomes my forward PE 4 year ahead? 400 divided by 16.25. 16.25. 16.25. We are giving it a PE of 30. So you see, these estimates are also stretched. These estimates are also stretched. This is kind of an okay estimate. Correct? Ab, if I divide these numbers by 4, we have 4 quarters. If I divide these numbers by 4 and I just
my eye is on two things. One is a PAT margin of 2%. If the PAT margin grows, total equation changes because I am assuming. तो यहाँ पर तो वो 1000 करोड़ का सेल कर सकता है, मोस्ट लाइकली वो कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है. यहाँ पर अगर मैं 7000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना सेल आता है मेरा? 1750. हाँ, 1750. 1750 per quarter. If I am still invested in the business and I'm looking at the quarterly results and this is the tentative run rate which the company is generating, I'm in okay zone. What is my number over here? 12,000 divided by 4. 3000 crore. 3000 crore per quarter. And what is my number over here? 5000 crore. Per quarter. Yeah. So now you think a business which is doing 1000 crore in over here will be doing 5000 crores of sales per quarter. So he would be needing 5 times the more resources, 5 times the more infrastructure, 5 times the more people to make it possible. Correct? And he'll be needing 5 times the more money to make it possible. Correct? And he will be needing 5 times the more supply chain to make it possible. Now you know what are the questions you have to look into con calls or ask the management or focus upon. अरे चलो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वॉल्यूम कर रहे हो, क्या आप इतना काम कर पाओगे? सर क्या लेकिन रिसोर्सेज और कैपिटल क्यों 5 टाइम्स लगेगा 5 टाइम्स बिजनेस करने के लिए? रिसोर्सेज तो लगेंगे ना, बंदे तो लगेंगे ना रिटेल काउंटर पे. फैक्ट्री नहीं लगेगी क्योंकि इट्स रिटेल है, इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस. वेयर हाउस भी चाहिए होगा इतना बड़ा. पैसा तो चाहिए, वेयर हाउस तो चाहिए. सर बेचने वाले उधारी में माल देते हैं. तो ठीक है, वो सब सही है, उधारी माल देते हैं, वो कैश फ्लो, वो सब ठीक है. नाउ see what he is saying. He says 100 से 300% ग्रोथ आ गई मेरे B2B मार्केट प्लेस में सिंस कोविड, बिकॉज लोग कंस्ट्रक्शन में जाने लगे हैं. क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ेगा? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, जिसका आंसर हर बंदे के दिमाग में अलग अलग हो सकता है. आई एम गिविंग द क्वेश्चंस. See, GST registrations have gone up by 40%, which is a fabulous growth since COVID. डिमोनेटाइजेशन के बाद ही सेंगे PLI स्कीम्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे, जहां पर लो कॉस्ट हाउसेज बनेंगे. Then he says this is the company background. SG का रेवेन्यू मॉडल, SG मार्ट का रेवेन्यू मॉडल ये है. दे आर अ B2B डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. सो ये कंज्यूमर को जाके बात नहीं कर रहे हैं, ये सीधा बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हैं. ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल दे रहे हैं. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इज HR sheets is a market. Now if you want to understand, will they be able to do 20,000 crores of revenue? You have to see. They can. I know they can. I know. I will not say anything precise over in this call because सबका अपना अपना एक thought process है. मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ. See, what is the size of HR sheets today? How are HR sheets made? By HR coils. They have a color coating plant and बहुत सारे plants है. And which are the other companies making HR sheets? There are other companies also. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इसमें एक सबसे पसंदीदा शेयर सबका है पॉलीकैब, जिसको सब परेशान है कि पॉलीकैब गिर गया. What is the tile market saying? I need to go and check the business of Kajaria and Sumani Ceramics and Asian Granito. I need to read information about the cement industry, what rate the cement industry is growing and what companies they are growing, because they will have to pick up the products and sell on their platform, because this is a platform business. बाइंडिंग वायर, हमने वहां पर मार्केट देखा, पर ये चीजें किस रेट से ग्रो कर रही हैं. अगर मेरे पास इन इंडस्ट्री का ही ग्रोथ रेट नहीं आ रहा और ये कौन से ब्रांड के चीजें बेच रहा है. सो आई हैव 1 2 3 4 5 6 different sectors to study, because he is supplying to the distributors, then the distributor is supplying to the dealers and the dealers is selling to the retailers. ये सारी चीजें, just go and read the leaders in the back to understand कि this calculation which I am trying to do, is this possible or no. Next, similar for this and similar for this. Flat steel and long steel and billets. अभी अभिषेक जी तो रायपुर में, इनको तो स्टील का ही काम है सारा वहां पर. फ्लैट एंड लॉन्ग आपको टाटा से मिलेगा, सेल से मिलेगा, जिंदल से मिलेगा. बिलेट्स तो रायपुर में गली गली में भरे पड़े थे. ठीक है, उससे कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसकी कितनी ग्रोथ आ सकती है. So this is what they are doing. This is how
स्टील कंस्ट्रक्शन एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स, बेसिकली इनका काम स्टील का है तो ये स्टील पे फोकस करेंगे। वेयर हाउस में आता है, बिल्डिंग मटेरियल में जाता है। Going to read about Shankara is into selling building materials, a one-stop chain. So this is how you get, these are the images, कि क्या 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 इनको बेचना है, क्या क्या इनको करना है। The TMT 550D जो टाटा का एक स्टील आता है, जिंदल का आता है, the industry size is 2.9 trillion. Why will people buy from them and why will not they buy directly from Tata? Or why will Tata give them, or will Tata give them a cash discount because they will be the largest buyers from Tata and they will sell it, but they need space to stock it. You cannot have an Amazon web page to sell steel, TMT bars. ठीक है, this is binding wire. ये industry size of 90 billion. कौन सी कंपनी की बाइंडिंग वायर है? जितना ये टीएमटी बार्स बिकेंगे उतनी बाइंडिंग वायर बिकेगी, बिकॉज बार को बांधने के लिए आपको बाइंडिंग वायर चाहिए 25 किलो का पैक आता है। दिस इज वायर मैश। ये वायर मैश क्या साइजेस क्या आते हैं, एंड टू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिपोर्ट्स, वेयर योर हैट, गो टू योर डीलर्स, वेंडर्स, वेयरएवर यू स्टे, गो एंड फाइंड कि यार मुझे ये मैश चाहिए, ये कितने की आती है, ये कितनी बिकती है, कितने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेते हैं, रोम अराउंड इन योर सिटी, कहाँ कहाँ ये लग रही है, टॉक टू द डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। दिस इज एचआर शीट्स, 550 बिलियन मार्केट साइज। हॉट एचआरसी कॉइल का बहुत ज्यादा तंगी है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। दिस इज थिकनेस व्हाट दे डू। So go through this presentation. This presentation is very useful and they have given a hell lot of information. Your market size, your market scenarios and और इसी को मेंटेनेंस रिसर्च बोलते हैं कि ये चीजें का आपने एक मोटा मोटा टेंटेटिव निकाल लिया। आर दे एबल टू फ्लॉक नियर दिस? इफ यस, then 14-15,000 crore market cap is justifiable. I'm not saying it will go to 14-15,000 market cap and fall. नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला. It can go beyond also. But we buying till 14-15K and just keeping a track on this, we are in a good zone. It can go to 30 also, it can go to 60 also. I don't know. But with the amount of information you have today, this is where you are going to. Suppose you come across this place and till here the story is okay. Again, you go and try and value the business. What is the market potential growing and what are they doing? Now, these numbers can change. Then you come to your this. So you don't value a business every second day, every day like a Tom, Dick and Harry. You value the business once a year. Or maybe twice a year when you get the balance sheet on the 6 months in the second quarter. Once a year or twice a year you do this. You don't do it every day. Right? Now if I tell you, if you knew this story and if you knew all this, maybe a tad bit of this, what is the market size, and you were reading this industry, now you go and see. चलो मान लो कि ये आपको स्टॉक मिलता होता या कंपनी मिलती होती, इसमें सर्किट नहीं लग रहा होता, इसमें फ्लोट कॉर्नर नहीं होता, वो सब चीजें नहीं होती, मान लो ये मिलता होता. The market price was what, $400? Today the market price was $11,600. So at $400, what would have been the market cap? What would have been the market cap? $400. Divided by 30, 4,6,500. 216 crore. Now see, 200 crore market cap or a 500 crore market cap, and we were assuming 14,000 crore market cap. Say 6 years, say 7 years. Then you do the CAGR. This CAGR number will grow drastically. So higher this CAGR possibility, the better you are, the safety you have with buying the business. The lower this CAGR, if this CAGR falls down to say 5%, I'm not interested in buying this company then. There is no opportunity to make money because these numbers are just workings which we are trying to do. Somebody will have some other number, somebody will have some other. So that will create the difference of opinion. That is why market exists. Okay. Now if this CAGR is 21%, it's still very good. बट अब आपको डर लगेगा. डर क्यों लगेगा? यार 12,000 रुपए का शेयर है, मैं कितने ले लूंगा? So that is why what the company is doing. The company is then giving you a bonus.
they have split the stock from 10 rupees to 1 rupee. So this price of 11,600 rupees or 12,000, whatever the thing, is going to be get divided by 20. So you will get this stock at 5. 600. हाँ 500 600 में आपको मिलेगा. देन यू विल वेरी हैप्पी कि यार 500 600 रुपए का शेयर मिले तो 12,000 का 15,000 का शेयर कोई लेगा नहीं. But nobody realizes, even if you give split or a bonus or you do anything, the market cap does not change. It will be the same. Correct. So if I get a business where I am able to see the opportunity, a large addressable market size or a large market size which this can obtain, right? I can go deeper into this. Why deeper into this is here is giving you the addressable market, correct? He is not giving you the serviceable market. What do I mean by serviceable market? ये TMT बाज ये पूरे इंडिया का नंबर है. क्या ये पूरे इंडिया में बेच पाएगा और ये सिर्फ 10 स्टेट्स में बेच पाएगा? That is also a question, no? Correct. Will he be able to sell in full country? No. Probably not. So suppose he is able to sell half the country. The 6 trillion market size is for full country today. So if he is able to sell half, not ऐसा नहीं कि मैंने 6 को डिवाइड बाय 2 किया और मेरा 3 ट्रिलियन मेरा अपॉर्चुनिटी साइज अगेन, नहीं. हो सकता है वो उन स्टेट्स को कर रहा है जहां पे माल ज्यादा बिकता होगा और उन स्टेट्स को नहीं कर रहा है जहां पे कम बिकता होगा. Suppose my number comes down to 4. So 6 trillion becomes my total addressable market size, and just hypothetically I'm telling you 4 trillion becomes my serviceable market size. So what you can do is, if you have a good idea of the serviceable market size or the addressable market size, you can change this number over here, the forward number. If 8 lakh crores is my addressable market size and 6 lakh crores is my serviceable market size, then my number over here comes to 6 lakh crores. Then accordingly my equation changes. Correct. But whatever I do, I am always constant on the look. What have I done wrong? This is market. It is, we are projecting something in the future. What have I done wrong? मैं कहाँ गलती कर सकता हूँ? If I am getting some new information, I am trying to find new information. I am trying to destroy the thesis. Why I am trying to destroy the thesis? ये number 8 नहीं होना चाहिए. ये number कम होना चाहिए. ये 2.5 नहीं होना चाहिए. कम होना चाहिए. I want to be conservative. Conservative हो, मैंने लेस numbers calculation किया है और ज़्यादा आ जाए तो that is icing on the cake, ना? So what evidence I can find by reading articles, by reading reports or any newspapers or anything where I can destroy this calculation? अगर मैं इसको destroy कर सकता हूँ, I can change the numbers, then this value changes. See, currently I am being able to value this business somewhere around here. मेरा crude estimate ये आता है 12-13 हजार करोड़ की इसकी market cap होनी चाहिए. I can be wrong. I'm human. Any questions? सर अगर ये डिस्ट्रप्टिव बिजनेस होए, जैसे कि जनरली ट्रैवल बिजनेस में हुआ, जैसे पहले ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंट हुआ करते थे, फिर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज आई, उसी तरीके से डी मार्ट आया, उसी तरीके से सर अगर ये डिस्ट्रप्टिव बिजनेस है, तब तो फिर ये जो हम 20,000 करोड़ के मार्केट कैप की हम बात कर रहे हैं, तब तो ये अचीवेबल है. बट अगर ये डिस्ट्रप्टिव बिजनेस नहीं है, डिस्ट्रक्टिव बिजनेस होगा ना, तो सबसे ज्यादा क्या चीज इफेक्ट करेगी? आपका ये नंबर बढ़ जाएगा. दिस विल इंक्रीज. विच वन सर? मार्केट शेयर. हाँ जी. बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस को क्लोज करके और उनकी दुकान बंद करके उनका मार्केट अपनी तरफ खींच रहा है. करेक्ट. So very first thing, I want my total addressable market to grow. If my total addressable market is not growing, so this is not useful. But please don't forget, this is to value startups and not established businesses. This is not the way to value an established business, just to value how startups work. And how to identify startups. I think सब लोगों ने कॉल से पहले बोला था कि now we are very well aware of how do you identify startups. मैंने जान करके ये कंपनी को चूज किया, आपको ट्राई टू वैल्यू दिस कंपनी बिकॉज देयर वाज डेटा अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन, नॉट इन द एनुअल रिपोर्ट, बिकॉज अभी तक एनुअल रिपोर्ट आई ही नहीं है.
तो सर इसका टाइम क्या होगा, इसका एड्रेसेबल क्या होगा, इसका ऑब्टेनेबल या सर्विसेबल क्या होगा, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मुझे जाके ढूंढना चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिल रहा है so that means the management does not want I should know, then why I am meddling my head on that business? Leave that and move ahead. You cannot understand everything. The things you can understand, focus on that thing, no? Right or no? इसी को तो बोलते हैं do something which you understand. If you're not understanding, why you're on that? Move ahead. If you're not finding, consult your seniors, consult your friends, consult your colleagues, and if they are not going to the thing. Now suppose अभी हम लोगों ने 12,000 या 14,000 जो भी हम लोग उसको वैल्यू कर पा रहे, suppose the market cap would have made 20,000 crores today. Would it have made sense to buy today? In No. spite of being a very big promoter, or a chart was showing you breakouts and it was going up and सब कुछ अच्छा चल रहा था, would it have made some sense to buy today? No, No. na. Precisely no, na. But we Yes. do such kind of mistakes and then we cry. Similarly, I tried and valued Bejel also. Now, something for everybody, the super champions of special situations over here, to learn. Just by counting the number of shares कि demerger pattern में कितना selling आएगा, वो कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ये होगा, वो होगा, doesn't make you out of the quicksand. Bejel still is undervalued. Results were bad. They reported a loss. In the firm, in the 6 cents firm, it was sold. But I personally still hold it. And my buying price was 115, 116 bucks. Because I still find it cheap. And same like Irida when जब मेरे को उसको मौका लगा करने का, I found it cheap. See, this is not the way to value an Irida or a Bejel का ठीक है. Well, it is kind of a startup in EPC player. Still it is good, but Bejel is not a good business. That is very sure. You cannot keep it under your pillow and sleep कि मेरे को तो अच्छे पैसे बन गए, नहीं होने वाला है. It is not a good business. And why the management demerged that business? Because they were not getting value for their parent company. जब मैनेजमेंट ही कह रहा है कि यार ये मेरा बच्चा जो है इसको मैंने घर से बाहर निकाल दिया और मैं जाके उसको गले लगा रहा हूँ, so that is stupidity. Correct? So be very clear why you are buying the investment and what is your logic behind to buy that investment. That is, be very clear. So even if you see 5%, 10%, 7% price going down, no matter, it will come back again. People are very smart in the stock market. Wherever they find value of pockets of undervaluation, they will erode that pockets of undervaluation. See how quickly Irida from 32 rupees of IPO went to 120 rupees, and it is stagnant over there. It came down to 105 and again at 120. वहां जाके वो रुक गया. Why? Why within a matter of few days? क्यों विजय जी? जल्दी भागा था ना इरिडा. हाँ जी सर, बहुत जल्दी भाग गया अभी ये बार. और समझ ही नहीं आया क्यों भाग गया. और उसका तो चार्ट ही नहीं था, और इसका तो RSI ही नहीं था, इसका तो वो स्टेज एनालिसिस ही नहीं था. The chart is not going to lead you anywhere. Chart can make you returns, but it will never create wealth for you. Be very sure for that. मैंने इतने चार्ट करे जितने आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे. It is never going to create wealth for you. मैं सच्ची बोलता हूँ. It is just utter waste of time and energy. जिंदगी भर चार्ट्स में लगे रहो ना, आपका कुछ नहीं होने वाला. Right? If a business is undervalued, markets are very smart. आपको पता भी नहीं चलेगा within a very short period of time that undervaluation advantage would be lost. Now, we try to value this business provided I assume that you knew everything about the business. Valuation is the last part, not the first part. So don't take it as a thumb rule कि यार मैंने तो एक फॉर्मूला सीख लिया या ये कर लिया and try and go and value business. Not going to work. Don't do it for every business. Not going to work. This is just to value startups.
Zomato was a startup, is a startup. Paytm is a startup. Now, if you see messages कि XYZ investor is selling and I am buying और ये चार्ट है और यहाँ से ये लाइन ऊपर घूम गई is utter nonsense. I'm saying on a recording line, it is utter nonsense. Why the IPO came at 2200 rupees stock price? Promoter wanted to suck out all the juice from the business and give you crap. See, even an excellent business at an exaggerated valuation is not going to make you money. You will have to wait for several years or several months for the fundamentals to catch the price. So if it is spread in your head, भाव भगवान से price action is God, you are wrong. Any questions? Sir, so basically valuation करना should only come after understanding the business, Of not course, before that. हम अगर of पहले course. वैल्यूएशन करना चालू कर दे सब बिजनेस का कि ये स्टार्टअप है इसका वैल्यूएशन कर देते हैं ये चीप है लेट्स बाय, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. That is not the right one. You will land into trouble. Know the story, know the promoter, know the management, know how much salary they are taking, know what is their growth plans, will they be able to achieve it or not, what they are talking in their public appearances, वो पब्लिक को क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. Never ever dream of valuing a company whenever we are looking at the company and at the first glance. To understand a business, even if you are able to read fast, it will take you at least 10, 15, 20, 30 days to understand one business in the proper sense. And you get to know more about this business once you buy it. तुक्का मारना बहुत आसान है, ज्ञान देना बहुत आसान है. तो कोई पूछता है ना आपसे कि इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा लग रहा है जरा बताओ, दैट पर्सन wants the answer in 5 minutes. नहीं होता है, not possible. E2E was a startup. Now I'll request Arun Kumar sir to go back 1 or 2 years and then value E2E in the fall of COVID. Why the price from 200 rupees is straight away to 800 rupees and still not stopping? Why? What happened? Why BSE at 450 rupees and it came down and skyrocketed to 2500 rupees? It did not stop. But you will not get this answer because BSE was not a startup. I'm giving you things, I'm giving you options. Why Cupid is not stopping at any price? Need to think ना. भाव भगवान से चार्ट हो गया, बेसिंग पैटर्न बन गया, 3T, सब बेवकूफी है. सर मेरा ये क्यूपिड वाली बात आई तो मेरा ये क्वेश्चन है, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मैंने भी किसी से सुना कि क्यूपिड ले लिया था और 291 रुपए के रेट पे बहुत थोड़ा सा एलोकेशन था, बट अभी वो मेरे लिए ऑलमोस्ट उस प्राइस से 6 टाइम्स का रिटर्न है मेरे लिए उस प्राइस से अगर मैं देखूं तो. हालांकि एलोकेशन मेरा बहुत ज्यादा नहीं था तो, बट सर ये जो इस तरह की रैली आती है ऐसा क्या चेंज हो जाता है बिजनेस में सर कि वो 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स ग्रोथ इन नो टाइम हो जाती है? Cupid what was going to happen was some big investor bought Cupid earlier on. Okay. So he was about to take control of the business, and then you have to buy n number of shares or n x percentage of company to acquire the company or to give an open offer. वो हम लोग पहले discuss कर चुके. But something happened. This deal did not go through. The management of Cupid was very old and they wanted to sell off and they wanted to lead a peaceful life. Now very recently they sold Cupid. और हम लोगों ने एक announcement कर लिया कि Cupid किसी को बेच दिया कर दिया कर. Now what is actually happening? If you look at the numbers of Cupid, this will not make sense to you. Why this will not make sense to you? The market cap is 2300 crores, right? And this 2300 crores company is just making 30 crores profit. And you see, is this a startup 2020, they sold more amount of products, which they are not able to achieve that level. So the business has not grown. The business has not grown since COVID. और यहाँ भी इन द बिजनेस में कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा था. हाँ ठीक है, मार्जिन है 140 करोड़ 130 करोड़ 150 करोड़, अभी तक 160 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है.
right? So why the hell this rally? The hell of this rally is this is highly overvalued. Why the hell of this rally? Because यहाँ पर एक नया मैनेजमेंट आया है और परसेप्शन ये है कि दिस न्यू मैनेजमेंट विल डू समथिंग वेरी गुड एंड द बिजनेस विल स्टार्ट ग्रोइंग like a rocket. The business will start growing like a rocket. Now look at these numbers. 3 years, nothing happens, and suddenly the revenues double. Once the revenues double, your profits more than double, and you have a margin expansion. Barring 19 and 20, has anything happened which gives me a sense that the business has grown or has done a margin expansion than 33%, or revenue, or the profits have touched 40 crores? नहीं ना, ऐसा तो So कुछ वो भी तो नहीं उल्टा कम हो गया उसके बाद 22 में. कम हो गया ना. तो why the rally? This rally is for perception. This rally is for perception. Now the new management is in and he will do something and वो कुछ अच्छा करेगा. वो अच्छा करेगा तो कुछ होगा, वो अच्छा करेगा तो कुछ होगा, वो अच्छा करेगा तो कुछ होगा. अरे उसको करने तो दो. Is Cupid justified at 1800? No. Is Cupid justified at 1200? No. When you see this is going gaining a momentum, तो momentum खेलो ना अपना इसमें. Momentum खेलो, मजे करो, मजे करो. But do you see if I am able to keep this business under my bed and sleep for the next 5 years? Probably not at this value. मोमेंटम क्या है? इसमें आप मूविंग एवरेज लगा लो. ये मेरा मूविंग एवरेज चल रहा है एंड जब तक वो मेरा मूविंग एवरेज चलता रहेगा उसके नीचे नहीं आएगा जब तक मैं बैठा रहूंगा. So will you wait till $1,000? You can't wait till $1,000. It's a 50-day moving average. Or you do whatever you tools you want to use on your charts. इसमें चार्ट खेलो. लोगों को जाके ज्ञान दो ट्विटर पे कि I made this much allocation किया. Get more followers on Twitter. People will start liking you and they will start believing you whatever you say. The point is there is a new management over here. No, they're going to get new good numbers. They're going to grow the business. They're going to grow the business. They're going to grow the business. अरे अभी हुआ क्या? Similarly, this happened in Eveready. Same story. कोई फर्क नहीं है. 2500 crore का market cap है. New management came and सब कुछ हो गया और they said we going to grow the business, we will turn it around. इन्होंने सारा पुराना जो भी झमेला था, they took a write off. Dabur came and bought this Ketan family business. Have they able to grow the business? Forget this. Has anything happened? चलो ये 190 crore other income है. Has anything happened? ठीक है, nothing happened ना. See in the last 3 years what happened, last 5 years what happened. From 80 rupees, the stock price went up to 300 rupees. This was 80 rupees over here. It went up to 300 bucks. From 300 bucks, has something happened. हम लोग क्या करेंगे? We are like lazy people. We like shortcuts. We will create a line over here. ठीक है, we'll create a line like this. Breakouts. अरे तो boss, this was a breakout ना. This was a breakout now. Why did it's not sustaining? Then we have a shortcut. It will do a retest. Utter bewakufi. Is the business doing something? Are they able to grow? Are they increasing their assets? Are they able to reduce drastically their debt? Are they making exaggerated amounts of cash flows? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. ठीक है, अभी Q3 का नंबर आएगा. 1 or 2 quarters more, the numbers don't pick up. आपको ये 300 रुपए का भाव भी नहीं मिलता. It will even go way below the open offer price. So what is the wrong notion? कि यार किसी कंपनी ने preferential कर लिया, open offer आ गया, that becomes my base. No, wrong. Does not happen. Here, the perception, Dabur management is in and they will do something, they'll do something. कहीं ना कहीं तो जाके तो this stupidity has to end. Similarly for Cupid, कहीं ना कहीं जाके तो stupidity has to end. Correct. अरे यार मैंने जल्दी बेच दिया और मेरे बेचते ही ऊपर चला गया. Why I'm feeling pissed off? आपकी कोई होशियारी नहीं है और आपकी होशियारी मार्केट में चलती भी नहीं है. If the business is good, the time to sell is never.
Just few examples. 2008 was a drastic fall, right? Who all remember 2008? Drastic Yes, market fall. If 2008 was a drastic, यहाँ तो चलो अभी chart ही नहीं है. If 2008 was a drastic market fall and this 2007, this company was $100, and in the lows of 2009, this company was $40. It was a 50% drawdown. Even if you had bought this company at $100, वहां से कितने ये बोनसेस और कितने ये डिविडेंड्स दे चुका होगा, वो सब तो छोड़ो, वो तो आपकी कीप इट इन योर पॉकेट. सी द स्टॉक प्राइस टुडे 2500, right? If you are in a quality business, if you are in a good business and you have a long term horizon, valuations will not matter. Even if you buy it expensive, the time to sell it is in never. This was COVID fall. Now can you see this COVID fall, small blue arrow line going down? कितना डर था ना कोविड में. Why this Asian Paints, in spite of becoming such a big company, why the stock price doesn't fall drastically? What was 2008? This was 2008. 2008 में सबकी हाथ खराब हो गई थी. 100 रुपीज स्टॉक प्राइस. आज क्या हो गया? 19 times बुक वैल्यू. चलो जब परेशानी आती है, फॉल्स आते हैं, we get finance businesses goes bad, liquidity crunch and अब तो कह रही है कंपनी मर्ज हो गई है, demonetization and liquidity crunch and COVID. Do you think maybe from 2005 or maybe even before that, this was an old company, there was any day which you had found it good to sell this company and not repent after say 1 month or 2 months? Any day ऐसा कोई दिन था जब आप बेच के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद बोलते यार I sold it very early and I'm very bad at it and this and that? You can catch this at the bottom at 4 piece. 4 piece stock. Suppose you got it at the peak of the bear market, जब market गिरने वाला था, $10. $10 to what? $350, $300. A single 30x with a good allocation makes your life. Trading does not. Why does Bajaj Finance इतना सारी परेशानी आई, कोविड में गिर गया, लिक्विडिटी क्राइसिस, इनके पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? Why? They had a fall from 5,000 rupees to $1,700 and achieved such big volumes. Everybody sold. आज कोई इसकी बात भी करता है कि कोविड में ये स्टॉक गिरा था? सर स्लाइटली ऑफ द टॉपिक, हाँ, जैसे अभी पॉलीकैब था 5600 5700 का लेवल देख लिया आपने पॉलीकैब में, और which फिर was expensive वो और which was cheap, पहले वो भी देखो. which was expensive और which was cheap वो भी देखो. अब ये नहीं कि 57 से वो गिर के 3,000 आ गया या 4,000 आ गया मैं ले लूं. Because the very basic reason for this is, what is your time frame? You are buying for 12 days, 10, 15 days, 20 days, 6 months, 1 year. If your time frame is less than 5 years, valuations will matter. If your time frame is may say 7 years, 10 years, you can buy it. No questions asked. If you believe, again I'm saying if, I'm not giving you any judgment. If you believe, it's a quality business. वो पैरामीटर्स आपको खुद को देखने हैं, वो आपको कोई बताने वाला नहीं है. नहीं सर, मैं तो बस वो प्रॉफिट बुकिंग का ये पूछ रहा था कि लाइक इट इज सेड कि व्हेन इट इज अ गुड बिजनेस, टाइम टू सेल देम इज नेवर, राइट. बट सर फिर वो प्रॉफिट घर आएगा कैसे? यही तो प्रॉब्लम है सबकी. If it is a good business, the time to sell it is never. So invest that amount which you don't need for the next 5 years. अगर मुझे घर बनाना है, अगर मुझे बच्चे की पढ़ाई करानी है, उसकी शादी करानी है, तो why I'm putting that money in the market? Correct. If some X amount of money you don't need for the next 5 years, 10 years, put that money into stock market. Stock market was never for speculation and it was never for satellite portfolio. Never satellite portfolio was the crux of stock market. Okay.
So person who is guiding you, you do this and profit book kar lo, ye le lo, has something or the other vested interest in you. That is why he is guiding you. मैं तो खुला बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ. It's your own hard earned money. Why are you आपको कहते हैं ना, आप अपनी गलती की सजा लो. चलो मेरे से गलती हो गई, मैंने वैल्यूएशन नहीं समझा, मैंने बिजनेस अच्छा नहीं चूज किया, मेरे से गलती हो गई. अब अपनी गलती की सजा लो ना, चलता है. दूसरे की गलती की सजा आप क्यों लेते हो? That is my point. So learn to make your own cooking and eat that and enjoy that. पॉलीकैप गिर गया है, कल को वो और नीचे भी जा सकता है. I don't know. Correct. Is it overvalued still? Yes, it is still overvalued. If my time horizon is 5 years, 60 months, nobody here can even hold on for 60 days. Is my time horizon for 5 years or more? Yes, I can look to buy it because if I feel it is a good business. If I am crying कि यार मेरा इतना profit था और मेरा चला गया, that means you're looking at the price and you will be feel sad, you'll be shattered कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. Because we are looking at the price, because we are looking at our portfolios 100 times a day. ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में. See, very frankly, I also post photos कि यार इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, just to create FOMO, just to test you people कि किसका दिमाग खराब हो रहा है. और जिसका दिमाग खराब होता है ना कि यार इतने लाख प्रॉफिट हो गया, इतना करोड़ प्रॉफिट हो गया, या इतना 1000 प्रॉफिट हो गया, उसने एक्चुअली मार्केट का बिहेवियरल एस्पेक्ट समझा ही नहीं है. 85% is your behavioral aspect. See, data is everywhere. Interpretation of the data counts. 15% depends upon your analysis, how you can analyze the business. 85% depends upon your mentality or your approach to markets. If your approach is wrong, you simply cannot make it big. Better give your money to a fund manager and enjoy your life. Don't take the tension. Or invest in an index fund when the market falls. Sorry, I don't see anybody in the group who has a very good behavioral approach to the market. मेरा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरा भी कोई सुपर चैंपियन, मेरा भी नहीं है. We cannot eliminate biases, we can reduce them. We cannot eliminate. Read about Naval Ravikant and read about what Munger has to say, Mungerism has to say about behavioral. Read about Parag Parekh sir, what he had to say about behavioral sciences. That will help you more. That is the point. और ये ले लिया यार मैंने, वो ले लिया यार, मेरा ये स्टॉक यहाँ से चल के इतना हो गया यार, मेरे को इतने लाख प्रॉफिट आ गया. वो अटर बेवकूफी है. मैं तो साफ मुंह पे बोलता हूँ, वो अटर बेवकूफी है. आई मेड 1x, आई मेड 2x. व्हाट एलोकेशन? 1% एलोकेशन. क्या फायदा? कैन यू पुट 50% एलोकेशन, 40% एलोकेशन एंड मेक 2x? दैट विल चेंज योर फॉर्च्यून्स. A 2% allocation going 5x, 10x will do nothing for you. Then these are my thoughts. I can be wrong also. Please correct me if I'm wrong, if you feel I'm wrong. Any views, comments, questions, please ask. सर डिजी ड्राइव का डिस्कस करना था. मैम वो शुक्ला जी और धनंजय जी आपको टेक फॉरवर्ड करेंगे. मैंने एक वीडियो डाला है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज का, वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड demerger pattern. So those who have missed, please have a look at this video. You will be able to, I'll just remark it. मैंने this लिख के ग्रुप में डाला है. You can click on the link and you will be seeing how the demerger pattern works, because this was a startup business. Actually, it was not. It was a startup having zero sales. Can you believe a startup can have zero sales? Until date it has zero sales. अगर सेल ही नहीं होगी तो पीएल कैसे बनेगा? So Hemisphere is a startup business. What is the aspect of the business? They have got to use assets, land bank. So I was very lucky and fortunate enough to make a 300% gain on a 3% portfolio allocation in this business when the story played out. Until that price has not to be seen.
if you want to know about DigiDrive, my humble suggestion, ma'am, don't look for pinpoint handholding how we do with our children when we teach them how to write or catch a pencil or catch a pen. Watch this video. Maybe if you needed to watch 2-3 times, watch this and then see what is happening in DigiDrive. So I'm telling you two things. Dhananjay ji and Shukla sir will guide you for the number of shares and selling and वो सब चीजें मैंने पहले भी ग्रुप में लिखा है, शायद आप मिस कर दिया आपने. ये दोनों आपको बता देंगे, नीरज जी भी बता देंगे, इन सबको पता है, ये सब चीजें ये लोग कई बार कर चुके हैं. But what these three, I'm damn sure, will not be able to tell you how do you value that company. Then these three will not be able to tell you if that is a good business or a damn business. ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ. नंबर ऑफ शेयर, सेलिंग, वो सब बता देंगे आपको. दैट इज द बेसिक स्टफ. तो नीरज जी, धनंजय जी, शुक्ला जी, जो मैंने आपको बोला, क्या आप मैम को हेल्प कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर दूंगा सर मैम को. तो सेलिंग का हाँ, डिटेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा. करेक्ट. ठीक है मैम, सेलिंग का डिटेल शुक्ला जी आपको बता देंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको ट्रैक करते हैं. मुझे भी लूप में रखना सर, कैसे करते हैं मेरे को भी. सर ऐसा है, वो ऐसा है आपने जो डाला है मुझे पर समझ नहीं आया ना, वो कहाँ से क्या फिगर्स देखने एक बार सर, ऐसा है, मेरी बात सुन. ऐसा है, आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर कॉल स्टार्ट कर सकता है, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं. There is no limitation, no restriction in this group. Anybody can do anything. So whatever call you do or whatever you do, please don't forget to record and save it in the recording thread so others can also see. If others are not able to join, even if I'm not able to join, आप लोग आपस में discuss कर सकते हो. You are always welcome and always free to do that. But before going into this calculation, please watch the hemisphere properties video. उसको देख लो, सब लोग देख लो. उसके अंदर क्या है, कैसे वो टाटा से डीमर्ज हुआ था VSNL से, व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट, हाउ डिड द वैल्यूएशन वाज डन, एंड आई वाज रॉन्ग टू द ट्यून ऑफ मोर देन 100%. मेरी वैल्यूएशन आती थी 8-8.5 करोड़ की, एंड गवर्नमेंट सेड वी आर गोइंग टू सेल पार्ट लैंड फॉर 19,000 करोड़. तो 8-8.5 को डबल करो तो 19,000. ऐसी कुछ स्टोरी थी उसके अंदर, आपको मिल जाएगा. 1-1.25 घंटे का वीडियो है. प्लीज हैव अ लुक एट इट. इफ यू रियली वांट टू लर्न, देन प्लीज फिक्स अप अ टाइम, run a call, do the recording, and शुक्ला सर को जब टाइम मिले प्लीज शेयर, चाहे लेट आवर्स में मिले चाहे सुबह में मिले, बाकी जिसको भी ज्वाइन, प्लीज डू दैट. नीरज सर अगर आप ही कर पाओ तो वो भी वेरी हेल्पफुल. ओके सर, एक क्वेश्चन मेरा था सर. हाँ सर. सर जैसे आपने बोला ना कि एक हैवी एलोकेशन के साथ ही जो है फॉर्चून चेंज होगा सर, तो ठीक है सर. अब जैसे क्या है कि कोई भी कंपनी पे कन्विक्शन है सर, तो अगर उसमें हम लोग 4 या 5 ही कंपनी पे करते हैं तो सर ऑल ऑफ सडन तो वन कंपनी पे हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना मेच्योरिटी आने में टाइम लगेगा सर. अगर आपको मेच्योरिटी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले भी पूछ चुके हो, अगर आपको मेच्योरिटी चाहिए तो मैंने कुछ बुक्स शेयर करी थी, बट जो मुझे पता है किसी ने तकलीफ भी नहीं करी उसको उठा के पढ़ने के लिए. मैंने कुछ बुक्स शेयर करी थी, and the very basic book which everybody should read is One Upon Wall Street, where you will find 5 different categories of businesses. एक कॉल भी किया था जिसमें हम लोगों ने बकेट्स देखे थे कि हाउ डू यू क्लासिफाई योर बिजनेस इन बकेट्स. नीरज सर म्यूट कर लो, आपकी तरफ से एको आ रहा है. नीरज सर म्यूट कर लो प्लीज. हाँ, वहां पर हमने देखा था कि 5 डिफरेंट बकेट्स के अंदर कैसे हम बिजनेसेस को क्लासिफाई करते हैं. अगर आपको किसी कंपनी के अंदर कन्विक्शन है, XYZ कंपनी, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, और वो ऐसे बकेट के अंदर है जहां पर आपका एलोकेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो बकेट कैसे पता चलेगा? वो आपको खुद पता चलेगा वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस बकेट्स. इसके बारे में हम पहले भी कई डिस्कशन कर चुके हैं. अगर आपको इसका थियोरेटिकल और इसका नोट पढ़ना है तो प्लीज read One Upon Wall Street by Peter Lynch. It is a very simple book. It is a very nuanced book and it will teach you a hell lot of things. अब special situations की बात आती है. Again and again I am telling you sir, special situations, demergers, mergers, spin-offs and these kind of things will give you good starting valuations. They will not tell you that this business is good or bad.
बेजल जो अभी लेटेस्ट जिसका फिकासो चल रहा है मार्केट में, इट इज नॉट अ गुड बिजनेस, इट इज चीप। जो चीपनेस से वो फेयर वैल्यू है ना, वो गैप खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, देन इट इज नो पॉइंट कीपिंग बेजल। तो आपको जिस भी कंपनी में कन्विक्शन आ रहा है, पहला सवाल उस कन्विक्शन आने से पहले वो कौन से बकेट में है। क्या वो बकेट है जिसके अंदर आप ज्यादा एलोकेशन दे सकते हो? अगर हाँ है, यू आर गुड टू गो विद अ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अगर वो उस बकेट में नहीं है, you should not go with a concentrated portfolio. And as we had done a call earlier also in this group, जो जिसका recording folder में shared है, businesses change, people don't act their age, businesses don't act their age. ये एग्जांपल ये मैं पहले करा था, आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके देखो, आपको मिलेगा। आप नहीं पूछो सर, किया सर, मैंने सुना आप पूछो, रिकॉर्डिंग आपकी वो आप पूछो सर। उसी के रेफरेंस में सर इसमें जैसे बिजनेसेस चेंज होते हैं सर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं सर, ठीक है। बट अगर किसी बिजनेस पे कन्विक्शन है सर, और उस कन्विक्शन में क्या है कि ड्रॉडाउन्स भी आते हैं सर, तो ठीक है। अब इसमें जैसे वैल्यूएशन किसी भी कंपनी का, XYZ कंपनी का हमने वैल्यूएशन किया, अब हमारे वैल्यूएशन अगर गलत होते हैं सर, और हमारा कंसंट्रेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, तो उसमें जो ड्रॉडाउन्स होंगे वो बहुत हैवी इंपैक्ट करते हैं सर, क्योंकि मान लीजिए 25% के चार स्टॉक है मेरे पास। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक तो आपने बकेट वाला कॉन्सेप्ट बोला सर कि हाँ इसको पढ़ें, और जितना जिसमें ज्यादा कन्विक्शन आए और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो वहां हम इन्वेस्ट करें सर, है ना। ठीक है। ठीक, दूसरी चीज है सर, इस जो माइंडसेट है सर, माइंडसेट में क्या है ना, ड्रॉडाउन्स जैसे हम लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जैसे E2E है सर। E2E में क्या हुआ, E2E एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास भी था, बट मैं क्या हुआ उसको समझ नहीं पाया सर। ओके, अब समझ नहीं पाया, क्या था कि उसका जो विजन है, अब मैंने एस्टिमेट नहीं किया कि ये इतना आगे जाएगा सर, मतलब 4x या 3x होगा सर। मैं 2x या 1x पे ही आउट हो गया, जो भी एलोकेशन था मेरा लगभग 120% के आसपास आउट हो गया, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आया इस चीज को कैसे डेवलप करें सर, कि एक स्टेज पे जब पहुंची है कोई बिजनेस, अब आगे फ्यूचर में इसमें कितना और स्कोप है। अगर आप E का ही एग्जांपल लीजिए तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। E2E का ही लूंगा। जब आप 1x या 2x पे जब आप बाहर हो गए, तो क्या आपने उस बिजनेस को वैल्यू करने का कोशिश किया, प्रोवाइडेड आपको बिजनेस समझ आया हो? जब मैंने लिया था तो वैल्यू किया था उसको सर, जो मेरा एस्टिमेशन था, और जब वो एस्टिमेशन पहुंच गया उसके बाद उसमें ड्रॉ डाउन आया, तो मुझे लगा कि मेरी वैल्यूएशन ठीक है सर। यहाँ हो सकता है मैं बायस हो गया वहां पे, मेरी वैल्यूएशन ठीक है, और उस ठीक है सर, और मैं ठीक है। वहां वो आउट हो गया। आपकी जब आपकी वैल्यूएशन पहुंच गई, तो आपने उस फ्यूचर पॉइंट पे आपने उसको दोबारा वैल्यू करने की कोशिश किया, बिकॉज ये तो आप कर पाओगे, बिकॉज E2 इज स्टिल अ स्टार्टअप। हमने हमने 2016 में वैल्यू किया कि मेरे स्टॉक की प्राइस 200 रुपये होनी चाहिए या 250 रुपये होनी चाहिए, और मैंने उसको 50 रुपये पे ले लिया, 50 रुपये से वो 250 रुपये चला गया, करेक्ट, और वहां से ड्रॉडाउन आ गया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मार्केट इज working as I see it, and at 250 rupees or 240 rupees the stock had a drawdown, and since my valuation model was okay and it was working, so I took an exit. But did you try to value the business again with the new set of information when the stock price was 250 rupees? The answer is no. नहीं सर, ट्राई किया, बट आई ट्राइड सर, बट बेसिकली क्या था, उस टाइम ना कोई रिजल्ट था, ना कोई डाटा चेंज हुआ सर, उस पीरियड में कोई डाटा चेंज नहीं हुआ सर। तो ठीक है ना, तो फिर क्या परेशानी है? अगर आपने ट्राई किया था और वो रिजल्ट और डाटा चेंज नहीं हुआ और आपको नहीं समझ आ रहा था और एग्जिट करके, नथिंग रॉन्ग इन इट, सर। ये नथिंग रॉन्ग इन इट सर। एक बफेट साहब की क्या कितनी कौन सा जिसकी एक कहानी है, यू सिंपली कैनॉट मैरी एवरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, नथिंग रॉन्ग इन इट। हो गया ना यार सर। हाँ, जब कोई डाटा ही नहीं चेंज हुआ था तो आपको सेल क्यों करना था, मेरे को ये बताओ। आप बेसियन लॉ जो सर आप नहीं, डाटा चेंज नहीं हुआ था, उनकी जो वैल्यूएशन जो उन्होंने एस्टिमेट करी थी वो वैल्यूएशन आ गई थी, ऐसा कहना चाह रहे हो? अच्छा, आपने जो वैल्यू किया था वो वैल्यू आ गई थी, उसके बाद सर वैल्यूएशन आ गई थी, तो आई डोंट थिंक कि उसको सेल करना चाहिए, रादर वेट करना चाहिए कि कुछ नया क्या चेंज हो रहा है। नहीं,
शुक्ला जी का कहना है कि उनकी वैल्यू आ गई थी और वहां से वो गिरना शुरू हो गया था, तो उनको लगा कि ये मेरा एस्टिमेट सही है, मेरी वैल्यू आ गई और यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया। अच्छा, ऐसा सिनेरियो, तो ऐसा ऐसे में आई थिंक आपको पूरा एग्जिट नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत आई थिंक मेरे हिसाब से 25-30% होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक बार एग्जिट हो जाते हैं तो बिजनेस अपन छोड़ देते हैं, जनरली मैं देखा हूँ यही होता है। सर सेम चीज नहीं, दो बार हुआ सर, सेम चीज यही हुआ मेरे साथ एनएमडीसी में भी। एनएमडीसी पढ़ा हुआ बिजनेस है, मतलब रीड किया हुआ है, समझा हुआ है सर, वैल्यूएशन भी मैंने करने की कोशिश करी थी, एक बार डिस्कस भी हुआ। आपको एक एग्जांपल दूं, इस क्वेश्चन को लेके एक एग्जांपल दूं। थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग खराब है, आपको तो पता है सर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मेरी हैंडराइटिंग खराब है, तो देखो सर, शुक्ला सर का जो एग्जांपल है, मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे घर में घड़ी होती है, घड़ी होती है ना, जिसमें ऐसे ऐसा ये टाइम चल रहा होता है। घड़ी के नीचे एक पेंडुलम होता है, और फिजिक्स में पढ़ा था, साइंस में पढ़ा था, वो जितना पेंडुलम जितना इस साइड जाता है ना, लेफ्ट साइड, उतना ही वो यहाँ से राइट साइड जाता है। अब शुक्ला जी ने बोला कि मैंने उसकी वैल्यूएशन निकाली और वो फेयर वैल्यू आ गई, तो ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ये फेयर वैल्यू है, ये अंडर वैल्यू है और ये ओवर वैल्यू है। अब जब ये अंडर वैल्यू था और ये यहाँ से ये वापस इस मोशन में आ रहा था पेंडुलम, शुक्ला जी फेयर वैल्यू पे आके अटक गई, क्योंकि ये आके ये थोड़ा रुक गया, बिकॉज मार्केट्स आर लाइक दिस, दे आर नेवर लीनियर। यस सर। So what you miss, sir, from fair value, taking a break of few days or a few weeks, it could have also gone to an overvalue zone. So आप यहाँ से चले, यहाँ के रुके, but the pendulum has to work ना on equally on both the sides. Yes sir. Right? Yes. और ऐसे केस में डर लगता है कि यार मेरे प्रॉफिट्स चले जाएंगे, तो आप वहाँ थोड़ा सा सेल कर देते हैं टू बी मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल कि 10-20% मैंने सेल कर दिया, 50% मैंने सेल कर दिया, and you could have waited for new information. हाँ, 50% सेल कर दिया और वो न्यू इन्फॉर्मेशन खराब आ जाती है और स्टॉक प्राइस गिर जाता है, तो फिर आप मुझे तो गाली देते हैं कि यार आपने तो बोला था रोकने के लिए और वो खराब, अगर मेरे बच्चे को 50% के प्रॉफिट चले गए, तो फिर वो भी पॉसिबिलिटी है। मार्केट्स आर डायनामिक, nobody can pinpoint, मार्केट्स आर डायनामिक। बट अरुण सर से पूछो, अरुण सर ने तो आज तक बेचा ही नहीं, वो तो लेके बैठे हुए हैं, राइट अरुण सर? Yes sir. So what gave you the conviction to just hold on to it? It's a good business, sir. Cloud computing business. So. Yeah, it's a good business and it's a growing industry. So that is why, if similarly, same example, if I wouldn't have invested in Vari Energies in a pre-IPO round, I wouldn't have been able to spot Irida, because वहां पर वैल्यूएशन की बात ही नहीं आ रही थी, वहां पर ये बात आ रही थी कि दिस कंपनी इज गिविंग टू एक्स पीपल, एंड जो भी सारी स्टोरी पहले डिस्कस हो चुके। द ओनली क्वेश्चन व्हिच केम टू माय माइंड इज हाउ कैन दिस थिंग बी डैम सो चीप, एंड इट वर्क ब्यूटीफुली। और आज क्या होगा, इफ यू गो एंड लुक एट अ वीकली चार्ट, इट इज फॉर्मिंग अ बेसिंग पैटर्न। आज भी सर्किट लगा है, कल भी सर्किट लगेगा और वो जिगजैग ऊपर जाएगा। So if I'm buying in an overvalue zone and my time horizon is not long, that means I'm playing the fool. If I'm playing the fool, then use your charts. अब शुक्ला सर, ये जो टाइम एनालिसिस हमने किया, मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ, आप इसको जाके देखो और तब इसको एनालाइज करो। जब आपने वो E2E सेल किया था, उस टाइम क्या इंफॉर्मेशन थी, एंड देन गो एंड एनालाइज क्या गलती हुई मेरे से। We people only talk about winners, X, 2x, 1x. We don't talk about mistakes, or we seldom talk about losers. Let's talk about mistakes. तो ये एनालिसिस आपको खुद को करना है सर, राइट? सेम गोस फॉर दीप्ति मैम। पर दीप्ति मैम, अभी हम लोग मेच्योर बिजनेस तक पहुंचे नहीं है, वे स्टिल एट स्टार्टअप, बिकॉज द रिस्पांस लेवल फ्रॉम द ग्रुप इज स्टिल वेरी लो। सो वन क्वेश्चन टू एवरीबडी, प्लीज आंसर, अगर आप लोगों को लगे, example of today valuing a startup, is it very clear now? How do you go with startups or no? 4-5 बारी कर चुके हम लोग ये। Yes sir. So valuing a startup is very clear now. बाकी लोग
Yes sir, yes sir. Yes sir. Yes Practice sir. practice करनी है. Practice करना है. Please use your notebooks. Please take your pen. Don't use the computer. Don't use technology. Please go No back to no your sir. notebook. Yes yes. उसमें ना आपके दिमाग में ज्यादा वो बैठेगा. So the next startup which you should value is E2E. Today, 3 years before, 5 years before. Try to value AHA Solar, still a startup. Try to value E2E, still a startup. Alpha Transformers, still a startup. Try to value these businesses. HD Finserv, still a startup. पर उसका वैल्यू करने का तरीका अलग है. ठीक है. Do you want I should share both these PDFs? जो बनाए मैंने. अगेन मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, आप लोगों में से कोई भी कॉल स्टार्ट कर सकता है. Whenever you do a call, whenever you discuss, please mention in the group. And शुक्ला सर प्लीज दीप्ति मैम को आप वो बताओ कि विजय सर को भी बताओ कि कैसे वो कैलकुलेशंस करते हैं. And I would request everybody to please go and watch the hemisphere properties video, the demerger pattern. You will be very clear with the demerger pattern when you watch that video. And then Shukla sir will guide you with the number of selling. जिसमें नीरज sir can also do that, Dhananjay can also do that, and Shukla sir can also do that. These three are the best we can count upon for the demerger pattern. Sure, sir. ठीक है. जी सर. Yes, sir.